सीए और एनपीआर और एनआरसी का विरोध करने वाले भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो विरोध आप कर रहे हैं और जिनके कहने पर आप कर रहे हैं वो लोग आपके मित्र नहीं है बल्कि आपके शत्रु हैं और वो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या ममता बनर्जी हो या कोई XYZ हो, ये सब लोग चाहते हैं कि इस देश से जैसे तैसे करके इन मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सीए का विरोध करेंगे। जब आप सीए का विरोध करेंगे, आप एनसीआर का विरोध करेंगे और एनआरसी का विरोध करेंगे, और जब आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना नाम गलत सलत लिखवाएंगे, आप उसमें नाम नहीं लिखेंगे, तो फिर आपका जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसमें भी आपका नाम नहीं होगा। और जब आपका नाम नहीं होगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार होगा कि इन लोगों को इस देश से बाहर कर दिया जाए, इनके मताधिकार को छीन लिया जाए और ये लोग जो हैं कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिए जाएं, क्योंकि ऐसा करना जरूरी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग बाग अपना अता पता नहीं देना चाहते, जो रंगा बिल्ला अपना नाम लिखाना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाता है और वो फॉर्म आपको ईमानदारी से भरना होता है, और जब वो फॉर्म आप भर देते हैं तभी आपकी आगे की कार्रवाई की जाती है। और अगर आप ये कह करके कि साहब मैं तो जो है एनपीआर में भी अपना डाटा नहीं दूंगा, मैं जो है सीए का भी विरोध करूंगा और कोई मेरे से क्या पूछ लेगा, कोई मेरा क्या कर लेगा, तो आप इस गलतफहमी में रहने की बजाय संभल जाइए, ये बेवकूफी मत करिए। और ये जितनी आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाएगा, ये सुनकर आप भले ही चौंक रहे होंगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने इस्लाम को लेकर एक बड़ी और व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की आबादी 16% हो जाती है, वो देश अगले 100 से 150 वर्षों में पूरी तरह से इस्लामिक बन जाता है। विश्व के सभी देशों की स्टडी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। Tehát Bülé volt az, aki egy ilyen matematikai képletet rávetített erre a történelmi folyamatra, és azt nézte meg, hogy hogyan történik meg ezeknek a társadalmaknak a szaturációja, vagyis a telítettsége a muszlimok és az iszlám ideológiája által. És ő ugye arra a következtetésre jutott, hogy ez egy több száz éves folyamat, bizonyos országok esetében akár 300-400 év is lehet. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% थी, जबकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक नई जनगणना में मुस्लिम 16% की संख्या को पार कर गए होंगे। ऐसे में हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या सिर्फ बढ़ेगी और बाकी धर्म के लोग घटेंगे। Pont, ez körülbelül 16%-a a társadalomnak, amikor muszlimmá válik, amikor maga az iszlamizáció folyamata már visszafordíthatatlan. Ez pedig átlagosan olyan 100-150 év környékén érkezett el. दरअसल इस्लाम को लेकर एक व्यापक रिसर्च डॉक्टर पीटर हेमंड की किताब स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम में की गई है। इसके मुताबिक अगर किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2% रहती है तो वहाँ उन्हें शांति प्रिय अल्पसंख्यक के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली और नॉर्वे में ये देखा जा सकता है, जहाँ मुस्लिमों की संख्या 2% से कम है। लेकिन जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2 से 5% तक पहुँचती है, वहाँ ये अपने रीति रिवाज थोपने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, थाईलैंड जैसे देशों में ये देखने को मिल रहा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 2 से 5% के बीच है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ का कट्टरपंथी उपदेशक अंजम चौधरी मुस्लिम युवाओं के साथ बकिंगम पैलेस को एक मस्जिद में बदलने की मांग कर रहा है।
And that disillusionment has become really apparent here in Britain, where angry young Muslims say they want to turn Buckingham Palace into a mosque. This man, Amjad Chowdhury, is their leader. He demands Islamic law, known as Sharia, to be the law of the land. मुसलमानों की आबादी जैसे ही 5% से अधिक होती है तो फिर ये मुस्लिम इस्लामिक मानकों को थोपने की कोशिश करते हैं, बाजार और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, समुदायों के भीतर शरिया कानून को अनुमति देने के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं। फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स जैसे देशों में ये हो रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि स्वीडन में मुस्लिम सिर्फ 8% हैं, लेकिन यहाँ दंगा फसाद शुरू कर दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व का ही ये वीडियो देख लीजिए। Smashed windows, cars on fire. One of Europe's most peaceful capitals, Stockholm, now witnessing its worst outbreak of violence in years. Hundreds of youths, mostly immigrants, have ripped through the city's suburbs in 4 nights of unrest. रिसर्च के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की 10% या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर वहाँ अराजकता और तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। इस श्रेणी में भारत, इजराइल, रूस, केन्या और गुयाना जैसे देश आते हैं, जहां मुसलमानों की संख्या 10 से 20% के बीच है। मुसलमानों की आबादी जैसे ही 20% से अधिक होती है तो फिर मुसलमानों द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले और आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक ऐसा ही 32.8% मुस्लिम आबादी वाले इथियोपिया में इन दिनों हो रहा है। 40% की आबादी होते ही उन देशों में बड़े नरसंहार, आतंकी हमले बढ़ जाते हैं। 40% की आबादी वाले बोस्निया और 59% आबादी वाले लेबनान में यही देखने को मिल रहा है। जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी का आंकड़ा 60% को छूने लगता है, वहाँ जातीय नरसंहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शरिया कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है। अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान में ऐसा ही हो रहा है, जहां मुस्लिमों की आबादी 60 से 70% के बीच है। जिस देश में मुसलमानों की आबादी 80% या अधिक हो जाती है तो एक प्रकार से वहां मुसलमान पूरी तरह से अराजक हो जाता है। ऐसे देशों में हिंसा रोजाना की बात हो जाती है। बांग्लादेश, मिस्र, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की और यूएई जैसे देशों में ये दिखाई देता है। किसी देश में जब 100% मुस्लिम आबादी हो जाती है तो वो देश अमन पसंद दिखाने की कोशिश करता है, जैसा कि अफगानिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया और यमन। इन देशों में 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा फिर भी नहीं हो पाता। जहां ज्यादा कट्टरपंथी कम कट्टरपंथियों को मारने और धमकाने की कोशिश शुरू कर देते हैं और शांति कभी हासिल नहीं होती। अब इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की धार्मिक सहिष्णुता को परखने की जरूरत है। You may or may not be aware that over the last few weeks there have been what the press is calling violent protests outside the Indian embassy in London. So much so that the Prime Minister of India has phoned Boris Johnson and asked him to reassure that the Indian embassy and its staff would be kept safe. So what's going on? Well, it's an interesting story, and it's one that reveals quite a few aspects of a particular religion, that religion of course being Islam. There's a region, Kashmiri region, which is contested by India and Pakistan. Both of them claim it for themselves. It's all a bit of a mishmash. China have some administration in there, India and Pakistan. But the region, the part of it that belongs to it, is administered by India, is the only Muslim majority region in India. And this is the first revealing part of this. It has had a special status in India because it's Muslim majority and essentially refused to live alongside everyone else according to the same rules as everyone else. So there's a lesson in that, and it's a lesson that many of us keep trying to drive home,
which is that Muslims, I'm not talking about every individual Muslim, but Muslims as a whole, en masse, refuse to live with everyone else. There's just no examples of them happily getting along with everyone according to the same rules. There aren't any examples, and the region itself used to be Buddhist, it used to be Hindu, and then along came Islam, and guess what it is now? So what's happened is that the Prime Minister of India has revoked that special status. He revoked it recently. And what was the situation prior to the revocation of this special status was extreme oppression of minorities. Hindus, for example, were not allowed to buy property there, and other restrictions. And this reveals something else that you will no doubt have heard, and that is that when Muslims are in a minority, they are all about minority rights. When they're in the majority, there are no minority rights. And once again, I can't think of an exception to this rule. In the 90s, as early as the 90s, recently, if you like, as the 90s, there were hundreds of thousands. The figures I've read are between 300 and 600,000 Hindus in the region. Now there are about 2,000. They have left because of terror attacks, because of oppression, coming from Muslims. It has been ethnically cleansed of Hindus. The region has been ethnically cleansed of Hindus. Again, because Muslims, Islam, will not abide minority rights when it is in charge, and it demands separate status and special treatment. And all that the Prime Minister of India has done is revoke that and say, look, anyone from India can live there, anyone from India can work there, anyone from India can buy property there. They have, in other words, equalised people's rights in that region and stopped Muslims bullying everyone, as they tend to do. Now, this has transferred itself to Europe, to the UK. We have this now. We have imported all these problems from all over the world so that they're happening right here and right now. And of course, the world was silent when Hindus were being ethnically cleansed from Kashmir. But now there's all sorts of furore. Even Jeremy Corbyn is now demanding an analysis of human rights in the area. Where was your demand for human rights analysis when the Muslims were trampling on the Hindus, Mr. Corbyn? There wasn't any. The world will start suddenly sitting up and complaining because Muslims are not being forced to live like everyone else, but are being, their privilege, their ability to oppress minorities has been taken away. And now all of a sudden there's a human rights emergency. Muslims are no longer allowed to bully people in the region. This is completely insane. I keep saying this, I'll say it again, the world is completely upside down. Islam and Muslims has a complete golden ticket to do whatever it likes. The UN never bothers with the horrific human rights abuses committed by Muslims and in Muslim countries. But if Israel puts a toe wrong, it's all over it. We have a pro-Islam world. It is the Islamization of the world. And suddenly when Muslims are asked to live like everyone else, they are suddenly oppressed. They are the victims. And this is exactly what has transferred here to the UK. Asking Muslims, expecting Muslims to muck in and just rub along with the rest of us is somehow oppressing them. Nonsense. Utter nonsense. It's Islam that is the oppressor. And the final point on this. Do we really believe that we have a Great Britain in the future? When cities have Muslim majorities, say Birmingham, for example, do you think that when Birmingham becomes Muslim majority, which isn't too far away, that there won't be demands for autonomy, for special status? They will ask for self-rule. This is already being hinted at. In the wake of Brexit, there were hints that London should actually break away from the rest of the UK and live by its own rules. This will happen again and again and again. And it will happen because Islam and Muslims can't and won't live like everyone else. They won't just be a part of Britain. They will start to seek their own autonomy. They will start to seek mini-states.
and we'll have a Yugoslavia-type situation. It's inevitable. When you import the whole world, you import the strife that goes on in the world, you import the rows and the arguments, you import all the problems. And now those problems are here. And I guarantee you, unlike every other minority group in this country, Muslims will not, they already don't. We already know that Sharia is self-governing. Many Muslim communities are self-governing with Sharia. The demands for separate states and special autonomy are just round the corner. And that, I'm afraid, will be the end of Great Britain. But we still have time. We are still the vast, vast majority. Non-Muslims are still the vast, vast majority. If we can grab hold of this issue now, we still have time to save Great Britain. We still have time to lay down the law and say that everyone who lives in this country will live under Britain's laws. We will not stand by and watch while this country fragments and turns into ethnic ghettos. We must save Great Britain, or there will not be a Great Britain for future generations. If you want to save this country, as I do, join for Britain. We are not going to cower down. We are not going to be politically correct. We're going to fight for the future of this country. And we're going to do all we can to make sure that future generations can grow up in the same Britain that we know and love. Join us. Shocking video shows kids in Philadelphia, in America, at an Islamic center appearing to vow to chop off heads and sacrifice their lives, all in the name of Allah. Watch. وتكون مرتع مرجب وجباني وسنضرب الأعناق عن أجسادهم ونحرر الأقصى الحزين العاري ونقود جيش. We will chop off their heads. Dr. Kanta Ahmed is a Muslim scholar and joins me now to weigh in. Help me out here. I'm used to seeing these videos from elsewhere. To see this in Philadelphia is disturbing. Beyond shocking. And this is out of the Islamist playbook. This is pure Muslim Brotherhood indoctrination of apparently American youth here in Pennsylvania, where they are being educated to romanticize and glorify martyrdom and Jew hatred and death to Jews and delegitimization of Israel. It's completely shocking and absolutely divorced from Islam, which recognizes Jews as a legitimate people, which recognizes the Holy Land as belonging to Jews, and condemns suicide and condemns this kind of warfare on civilians. So this school is run by the Muslim American Society. You say this group has ties to the Muslim Brotherhood. So the United Arab Emirates has designated this amongst one of 84 terrorist groups that include Al-Qaeda and ISIS, the Muslim Brotherhood, and this association. They also tar the Council on American Islamic Relations because of their affiliations with the Muslim Brotherhood. Remember, the Muslim Brotherhood is the mothership of Islamist terrorism. That's what birthed Hamas, which is now launching rockets on Israel right now to the tune of 430 in the last day. That's what birthed Hezbollah, and these are affiliates with that. And you're right, it seems to all come back to Israel, to Jerusalem. Al-Aqsa is the mosque on the Temple Mount, and to Jew hatred. You're totally right about that. Here's a statement the Muslim American Society put out when this video was made public. They said, not all songs were properly vetted. This was an unintended mistake and an oversight in which the center and the students are remorseful. MAS will conduct an internal investigation to ensure this does not occur again. But this wasn't a mistake. I mean, these kids had rehearsed it. There were adults in the room. Someone thought it was a good idea to put it up online. Somebody was filming it, and parents must have given permission. The children certainly didn't look remorseful, and this is a terrible slur, a tar on so many millions of innocent American Muslims who would repudiate this the way that I do. So it's horrifying. Plus, they have more than 50 chapters. Where else is this happening? 50 chapters in America? In America. So 50 chapters of schools like this in America, where things like this could be going on. We just don't see it. They could be. They could be. We don't know, and we don't want to demonize all Muslim centers in America, but this really gives us pause. Well, that's the point. If you don't clarify who's doing this type of thing, then everyone looks at the next Islamic school in their American community with suspicion.
So you've always made that point. Call out the radicals, and it liberates the peaceful Muslims. Including Muslim parents who might want to have their children educated in Islam and now be afraid to participate in centers like this. And we should remember also that the president of Egypt just met with our president, President Trump, on April 9th to recommend that the United States designate the Muslim Brotherhood as a foreign terror organization, which would free up our intelligence and security services to be able to investigate the finances, the backing and the affiliations of groups like this. That might be coming from really dangerous places. So President Trump should be commended for that. For looking at the Muslim Brotherhood. Wow, this should be a wake-up call for a lot of people. This is America, folks. Doctor, thank you so much for your time. We appreciate it.